Hello dear students, in last lecture section E question number 6 is completed. Now today next start the question number 7. Production cost function of commodity is C is equal to 1500 plus 0.05x minus 2 root x. Prove that the production is minimum when 400 unit are produced. यानी x आपका 400 आना चाहिए तभी आपका कॉस्ट क्या है मिनिमम होगा. अब चेक कर दें कि प्रूव होता है कि नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन राइट डाउन. C is equal to 1500 plus 0.5x minus 2 root x. Root x, it means raised x raised to 1 by 2. So write down next step. C is equal to 1500 plus 0.5x minus 2x raised to 1 by 2. Root हो यानी 1 by 2 raised. Now first order derivative. First of all find out dc by dx. 1500 is a constant value 0 plus 0.5x, it means here 1 raised 0.5 into 1 x raised to 1 minus 1. Next minus 2 into raised 1 by 2 x raised to 1 by 2 minus 1. Next step 0.5 in the 0.5 x raised to 1 minus 1 0. Here 2 cut, so 1 into x and only for value of x 2 LCM 1 minus 2 by 2. Next step 0.5 any variable or value raised to 0, answer is 1 minus x raised to 1 minus 2 minus 1 by 2. Next 0.5 into 1 0.5 minus 1 by x raised to 1 by 2. 0.5 minus 1 by root x dc by dx. First order derivative by. Now next second point is first order derivative is equal to 0. So here write down putting dc by dx is equal to 0. So dc by dx means 0.5 minus 1 by root x is equal to 0. minus 1 by root x opposite side plus 0.5 नहीं तो LCM ले लो आप. चलो root x minus 1 is equal to 0. अब minus 1 opposite side के जाएंगे तो plus root x is equal to 0.5 root x is equal to 1. 0.5 multiplication opposite side denominators. Root x is equal to 1 by 0.5. Okay, 1 by 0.5 means root x is equal to 2 आएगा. चेक इट. ओके 5 2 10. यहाँ पे एक पॉइंट कट करना हो तो न्यूमरेटर में क्या आएगा स्क्वायर. रूट एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आएगी अपोजिट साइड स्क्वायर टू स्क्वायर
value of x is equal to 4. Now next, second order derivative find out. Next step, d square c डिवाइड बाय dx स्क्वायर. जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का ही हम क्या करेंगे, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट. तो ये लास्ट थर्ड स्टेप जो है फर्स्ट ऑर्डर का, उसी से हम स्टार्ट करेंगे. सो 0.5 मीन्स कांस्टेंट वैल्यू 0. नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 x रेज टू 1/2. सो ये राइट डाउन -1 इंटू -1/2 x रेज टू -1/2 -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 x रेज टू 2 LCM. सो 1/2 x रेज टू -3/2 इस तरह से होगा. -3/2 डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस. सो 1/2 x रेज टू 3/2 d स्क्वायर c डिवाइड बाय dx स्क्वायर. ये हुआ हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, देखो फिर से एक बार यहाँ पे दिया होता 1500 प्लस 0.5 x माइनस 2 रूट x. उसका हमने क्या किया, रूट x यानी कि 1/2 0.5 x. ओके, इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया. यानी आपका आंसर है 0.5 माइनस 1/2. ओके, नाउ नेक्स्ट उसका हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट द 0. सो 0.5 माइनस 1/रूट x इज इक्वल टू 0 हो गया. नहीं, 1/0.5 डिनोमिनेटर. योर आंसर इज 1. x इज इक्वल टू 4. नाउ नेक्स्ट, अब x आपको दिया है 400 यूनिट आर प्रोड्यूस. प्रूव दैट द प्रोडक्शन इज मिनिमम व्हेन 400 यूनिट्स आर प्रोड्यूस. सो हियर राइट डाउन at x is equal to 4. okay, so d square c divide by dx square 1/2 ये क्या हुआ हमारा, ग्रेटर देन 0. 0 से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा. ओके, यहाँ पे आंसर आपका क्या आना चाहिए, 400 ही आना चाहिए था. 1500 प्लस 0.05 है, यहाँ पे मेरे मिस्टेक हो गई है. 0.05 यहाँ पे ऐड कर दो. 0.05 हर एक प्लेस पे एक एक ज़ीरो ऐड कर दो सिर्फ. 0.05 0.05 ओके. अब यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी. देखो 0.05 अब 20. ओके, यानी आपको अब क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 0.05 करना पड़ेगा. ओके, 2 रूट x गिवन था 1/2 रेस्ट 2 कट यानी कि x रेस्ट टू -1/2. ओके, वो तो ओके है 1/√x. अब यहाँ पे आपका आंसर 1 है तो डिनोमिनेटर में 1/0.05 करो तो मल्टीप्लाई बाय 1 and 1 20 यानी 100/5 यानी कि 25. चेक इट, आपका आंसर क्या आएगा 20. ओके, 5 2 20 यानी 20 एंड रूट x का स्क्वायर क्या होगा 20 होल स्क्वायर यानी कि x इज इक्वल टू 400. अब यहाँ पे आप आंसर 400 राइट करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0. यह प्रूव दैट x इज इक्वल टू 400 फंक्शन इज मिनिमम. यह राइट डाउन फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 400. ओके, ये प्रूव हो गया कि आपको क्वेश्चन में दिया था 400 पे ही क्या हो गया मिनिमम आपका कॉस्ट फाइंड होगा. ईयर कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट,
in question number 8. The demand function of an item P is equal to 30 minus x square by 10. यानी कि डिमांड फंक्शन P दिया हुआ है. फाइंड द डिमांड एंड प्राइस फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू. रेवेन्यू के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? R. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड फंक्शन राइट डाउन. डिमांड फंक्शन P is equal to 3030 minus x square divided by 10. Find the demand and the price for maximum revenue. यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? P और X दो ही फाइंड करने हैं. तो डिमांड फंक्शन P गिवन है, तो रेवेन्यू की फॉर्मूला क्या है हमारा? रेवेन्यू फंक्शन. या राइट डाउन. सो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू, आपको बोला ये फाइंड द रेवेन्यू. रेवेन्यू फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय R P into X. रेवेन्यू फंक्शन वैल्यू ऑफ P 30 minus x square by 10 into X. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन 30 into X 30x, x square into x, x cube by 10. ये हुआ आपका रेवेन्यू फंक्शन. नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो हम फाइंड करते हैं तो वही dr बाय dc, dr बाय dx. सो 30 into 1 x raised to 1 minus 1, because here x only for given, so raised to 1 minus 3x 3 minus 1 by 10. Raised 3 is given, coefficient is not given 1 into 3 3. Next 30 into 1 30x 1 minus 1 0 raised 3x 3 minus 1 and you get 2 3x square by 10. Any variable and values raised to 0, answer always 1. Next step 30 into 1 minus 3x square by 10. 30 ones are 30 minus 3x square divided by 10, dr divided by dx. Okay, now next find the first order derivative is equal to 0. Putting dr divided by dx is equal to 0. So value of dr by dx first order derivative, write down 3030 minus 3x square by 10 is equal to 0. 10 LCM 30 into 10 300 minus 3x square is equal to 0. Minus 3x square opposite side, so 300 is equal to 3x square. 3 multiplication left hand side denominators, 300 by 3 is equal to x square. Therefore value of x square is 100. x is equal to plus or minus 10, क्योंकि minus 10 square 100 and only for 10 square is 100. now हमको क्या है? डिमांड फंक्शन. तो अब डिमांड फंक्शन में कब होगी? जब x is equal to 10. माइनस लेंगे तो क्या होगा? डिफिकल्ट. देखते हैं. नेक्स्ट फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d square r डिवाइड बाय d स्क्वायर. सो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसका सेकेंड ऑर्डर 30 इज अ कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू 2x रेस्ट टू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2x रेस्ट टू 2 माइनस 1 बाय 10, 3 to the 6x रेस्ट टू 1 by 10, 6x by 10.
ये हुआ हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट मैं क्वेश्चन में क्या है डिमांड, तो डिमांड क्या है करेंगे हम ज़्यादा करेंगे। ओके तो यहाँ पे फाइंड द डिमांड एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो वैल्यू लेंगे वो क्या होनी चाहिए हमारी पॉजिटिव। ओके देखते हैं x इज इक्वल टू, यदि हमने 10 यहाँ पे माइनस राइट किया तो -10 कट, तो आंसर क्या आएगा -6 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा +10, क्योंकि +10 लेंगे तभी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तभी हमारी डिमांड क्या है बढ़ेगी। ओके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाएंगी नीचे जाएगी। नाउ नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 10, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ओके डिमांड फंक्शन के नाउ नेक्स्ट राइट डाउन d square x d square r divide by dx square is equal to 6 into 10 by 10 cut, answer is 6 greater than 0, therefore function is maximum। ये डिमांड x इज इक्वल टू डिमांड हमारी जो बोली थी वो हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 10। फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10, क्योंकि जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तब हमारा फंक्शन क्या बने मिलेगा मिनिमम। आपको क्या बोला क्वेश्चन में फाइंड द डिमांड एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू यानी कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें वैल्यू ऑफ x राइट डाउन, यहाँ पे 10 राइट करेंगे। ओके सो मैक्सिमम रेवेन्यू putting x is equal to 10 in demand function, okay so demand function is p, yeah write down p is equal to 30 minus 10 square by 10, so 30 minus 10 square is 100 by 10, so 30 minus 10, your maximum revenue, it means price is 20 rupees. Okay, so here completed question number 8. Next, in question number 9, in market demand law of rise is x is equal to 3 in bracket 60 minus p. Find the demand for maximum revenue. Demand for maximum revenue आपको x find करना है। ऑल्सो फाइंड द प्राइस, यानी जो हमने अभी फाइंड की थी इसी तरह से पी, एंड रेवेन्यू फॉर दैट डिमांड एंड रेवेन्यू, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन में फाइंड करना है, प्राइस, डिमांड एंड रेवेन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फंक्शन प्रॉपरली। ओके डिमांड लॉ ऑफ राइज, ओके यानी कि डिमांड फंक्शन इज गिवन in new line, x is equal to 3 in bracket 60 minus p। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन p में इसको हम कन्वर्जन करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप x is equal to 3 into 60 180, 3 into p minus 3p, minus left hand side 3p and plus x right hand side transfer. So now next step 3p is equal to 180 minus x, 3 multiplication opposite side denominators, 180 minus x by 3,
तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो 180/3 माइनस x/3 यानी कि वैल्यू ऑफ p 60 माइनस x/3 ये फंक्शन भी आप राइट कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट. r इज इक्वल टू p इंटू x, वैल्यू ऑफ p in bracket 60 minus x/3 into x. 60 into x, 60x minus x into x, x square by 3. Revenue function हुआ. Now next find first order derivative. dr by dx. 60 into 1 x raised to 1 minus 1 minus 2x raised to 2 minus 1 by 3. Now next 61 the 60x raised to 0 minus 2x raised to 1 by 3. Any variable raised to 0, answer is 1 minus 2x by 3. 61 the 60 minus 2x by 3 ये हुआ आपका फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. सो dr by dx is equal to 0. So dr by dx 16 minus 2x by 3 is equal to 0. 3 LCM 180 minus 2x is equal to 0. माइनस 2x है उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे यानी कि 180 is equal to 2x. 2 मल्टीप्लीकेशन है, अपोजिट साइड डिनोमिनेटर्स. 180 by 2 is equal to x, therefore x is equal to 90. ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डिमांड, फाइंड द डिमांड, तो डिमांड हमने फाइंड कर दिया x इज इक्वल टू 90. नाउ नेक्स्ट फाइंड द प्राइस. प्राइस यानी कि जो हमारा डिमांड फंक्शन p है उसमें वैल्यू पुटिंग द x, तो फाइंड द प्राइस. नेक्स्ट प्राइस, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 90 इन डिमांड फंक्शन. So p is equal to 60 minus 90 by 3. So 60 minus 30. Therefore value of p is 30. Price is 30 rupees. And last find out for the, आपको क्या बोला है, find the maximum revenue price and revenue for the demand. Next revenue. तो रेवेन्यू फंक्शन जो हमारे उसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9090. पुटिंग x इज इक्वल टू 9090 इन रेवेन्यू फंक्शन. सो राइट डाउन रेवेन्यू फंक्शन. r इज इक्वल टू 60 into 90 minus 90 square divided by 3. Now next step, 60 into 90 5400 minus 90 square 8100 divided by 3. Next step, 5400 minus 8100 by 3 यानी कि 2700. डिफरेंस फाइंड आउट. 5400 माइनस 2700, रेवेन्यू फॉर द फंक्शन इज 2700. ओके, सो यू आर कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9.
Next, question number 10. If the demand function is P is equal to 75 minus x square by 2500, then at which demand is revenue maximum? यानी कि आपको x फाइंड करना है. Also find the price for maximum revenue, and price भी फाइंड करनी है. जो x आएगा उसको क्या करेंगे? Write the demand function, value of x. So write down first of all function, demand function. P is equal to 75 minus x square by 2500. Okay. Next, find out revenue function. R is equal to P into x. Here value of P, demand function, write in bracket 75 minus x square by 2500 out of bracket into x. So 75 into x, 75x minus x square into x, x cube divided by 2500. This is your revenue function. Okay. Now next, find out first order derivative. It means dr by dx. (75x), none of the raised, it means 1 raised. So 75 into 1, x raised to 1 minus 1. Here raised to 3 coefficient is not given, it means 1 minus 1 into 3, x raised to 3 minus 1 divided by 2500. Next step, 75 in the 75, x raised to 1 minus 1, 0 raised, minus 1 into 3, 3, x raised to 3 minus 1, and square divided by 2500. Next step, 75 into 1, any variable and digit raised to 0, value is 1, minus 3x square by 2500. So first order derivative, dr by dx is equal to 75 minus 3x square divided by 2500. Okay. Now next, first order derivative is equal to 0. Putting x is equal to 0. So 75 minus 3x square by 2500 is equal to 0. Next, 2500 is the LCM. ओके नहीं तो भैया अपोजिट साइड कन्वर्ट कर लेते हैं. 75 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 2500. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे. सो 75 इंटू 2500 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर. 75 by 3 and 25 into 25 62500 x square. Therefore x square is equal to 250. Okay, sorry, x square, x is equal to plus or minus 250. Negative demand is not possible, so demand is positive. Negative demand is not possible.
negative value is not possible, sorry, negative value not considered. So x is equal to 250. Okay, now next आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्राइस फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू, यानी कि प्राइस P फाइंड आउट. प्राइस, ओके, putting x is equal to 250 in demand function. So P is equal to 75 minus 250 square by 2500. Now next step, 75 minus 250 whole square, 62500 divide by 2500. So 75 minus 220 cut 625 by 25. So price for maximum revenue is 5050. Okay, क्या किया? First of all demand function write down, then after revenue function, next first order derivative, then after putting x is equal to 0 for the first order derivative, find the stationary values 250 plus or minus, negative value is not considered, so x is equal to 250, and price for maximum revenue, putting x is equal to 250 in demand function, answer is 50. Okay, here completed for question number 10.